वंड्रस ऑनेस्टी, ऊपर से दिखाने वाली ऑनेस्टी नहीं भाई, बेवकूफ बनाने वाली ऑनेस्टी नहीं, अंदर से बदलाव। और एक बार अगर वो आ गया ना, तो बॉस यहाँ रहना would be most pleasant experience you will ever have। अचानक से तुम्हारा whole perception about the place will change। सारी दिक्कत कहाँ पे? बिकॉज हम अपनी ऑनेस्टी को शेयर ही नहीं करना चाहते। हम तो अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में, अपनी ईगो में, अपने अहंकार में जी रहे हैं ना। डायनेमिक का मतलब हम लोग समझते हैं, क्या मतलब है? क्यों है डायनेमिक? व्हाट डज इट मीन? टाइम टू टाइम वो हमारी रिकवरी में चेंजेस आते रहते हैं। डायनेमिक ऐसे क्योंकि एक चीज पे एडिक्शन हमारे able to share your feelings, but actually the priority is very different। You are at the starting of your career, you want to take up a job, you want to start something worthwhile, you have to save money, you have to get involved into a relationship, maybe get married, have children, have a stable life, future, all those things। Now maybe at the age of 60, he's already led his life, he saved his money, he has a son, he wants to take care of that, he has to look after himself. The priorities are entirely different. Now, here the purpose of recovery versus here the purpose of recovery is different. And this keeps changing in your life. And that is how it is dynamic. There are times you are prioritizing yourself. There are times you are prioritizing your family. There are times you are prioritizing maybe a job, maybe a health. Now at the age of 25, health is least of the priority. You are so agile, fit, you don't care. You feel it's hunky dory. I can stop any time, I can take, big deal, what will happen? Now at the age of 62, it's a big priority. With little change, things can go haywire. So if you see all the ones who are sitting here above the age of 50, their priority for the recovery is basically health and remaining all right. Maybe for youngster, the requirement is based on maybe their career, their life, their starting, they should have a better understanding between husband and wife and all those things. See how this is changing, and this is how whole concept of dynamicity. So maybe at different time you have different reasons to remain in recovery, and similarly you have to prioritize. So the priority of different age is going to be different. Now let's say today, if all of you write down what is the reason you should be in recovery. Now there is clear reasons you should be in recovery. Now maybe 10 years down the line you might have very different reasons for being in recovery. Now similarly, maybe the definition of recovery changes. Maybe 10 साल तक हम में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल कंज्यूम नहीं किया, हम क्लीन रहे, the life was hunky dory. Suddenly after 10 years we start consuming and things go bad to us. Now what is the difference? So it is said that it's a dynamic and will keep changing. And
And if we are not going to change with the evolution, then you will be not there. Now, this also has a very big significant meaning, which you understand now. Now, as disease is progressing, it's ever progressive. It's not going to stop ever. Now, similarly, if recovery is not going to be progressive, then you will have boom. Now we all think, I have promised today that I will never do it. But does that mean that that promise hold good 5 years down the line? Now, if you are not going to keep working on your recovery, then maybe your disease will overtake because it's continuously moving. Now, let me share you a very interesting example. So, there was a family, husband, wife, both were alcoholics. 3 kids, all 3 were alcoholics. Now, the youngest of all has seen so much of misery that he never drank. Okay. So, 4 alcoholic in a family. Okay. Now, at the age of 60, this guy consumes at the retirement of beer. And that's it. Within 2 years, he died himself. He died because of drinking beer. So the last one. Because the disease was continuing. Now, similarly, even if you are not consuming, then also don't think your disease will stop. And that's how you get manipulated and find the new reasons to consume. Let's say today you are stressed about your job. Maybe 5 years, 10 years down the line, maybe you are stressed about your son's admission. Maybe 10 years down the line, you have your own company and you are stressed about something else. Maybe Sandeep ji came first time, he was more stressed about what will happen to their child. And now he is more concerned that me and my wife are the only one here, the kids have moved out, what will happen to me? There is nobody to look after. So the life is ever mobile. And if you are not going to keep on working on your recovery in a dynamic way, then it will be difficult for you to survive the recovery. So disease is ever progressive. And अगर आप clean भी हो, तो आपको recovery के लिए ongoing basis पे effort करते रहना पड़ेगा. आपने खुद ही realize किया होगा कि बहुत सारी बार आप खुद ही छोड़ देते हो महीने 2 महीने के, लेकिन जब भी दोबारा चालू करते हो वो पहले से भी worse circumstances होता है. क्यों? आइडियली तो आपने छोड़ दिया, आपकी बॉडी क्लीन हो जानी चाहिए, यू शुड बी इन अ बेटर स्टेट. व्हाई थिंग्स गो हेयर? दे गो बैक टू वर्स. So the disease is always progressive, and if you are not going to make recovery dynamic, then any day disease will take over your recovery. So it's not one time treatment. आप लोग बार बार ये कहते रहते हो कि भाई हम कह रहे हैं हम नहीं करेंगे. That is just a manipulation. This is not going to work. Why? Why it will not work?
because we have no power over it. Why we are powerless? हम लोग को कहीं पे किडनैप कर लिया गया, एक हफ्ते तक हम बंद रहे, ना हमें पानी मिला ना खाना मिला। एक हफ्ते बाद किसी तरह हम स्लिप होके बाहर निकले और वहाँ से हम भागे। 10 किलोमीटर भागने के बाद हमें एक बंदा कुछ खाते हुए दिख रहा था और हम तो मतलब 7 दिन से ना खाया था ना पिया था। तो उस टाइम में क्या हम ये सोचेंगे कि ये बंदा खा रहा है, कैसा पानी है, क्या हो रहा है, या हम बस जाके छीनेंगे और खाएंगे, या हम मिनरल वाटर ढूंढ रहे होंगे। नाउ इट्स समथिंग लाइक दैट। आपका ब्रेन जब when the substance is inside, there is no logic works. We need means we need. मतलब there are incidences when someone murdered other to get the substance. We can go to the level of doing anything to get our craving fulfilled. कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम, बस यही समझ में आता है चाहिए तो। So will power वगैरह काम नहीं करने वाली है। Your promises will not work. And unless until आपका brain heal नहीं हो जाएगा, which is a time consuming process, this can take over. अब देखो यहाँ पे तुलसी में आके क्या हुआ। You were extremely powerless. अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी चांस दूं तो क्या होगा? यहीं पे अरेंज करने की कोशिश करते हो। You try to plead, say sorry, run away, and get angry, violent. क्यों? Because we are so powerless. We are making all sort of promises. Why? Because we feel कि बस हमने कह दिया है तो हो जाएगा. We are into a denial or delusional mode, not understanding the kind of a difficulty we have. आप समझ रहे हो इस बात को? So let's say अगर आपका brain heal नहीं हुआ है and you are exposed, and आपका brain जो है फिर से डिमांड कर रहा है, फिर क्या होगा? आप नहीं करना चाहते हो। There are times आप अपना आप को रोकना चाहते हो। There were times outside world जब आप बहुत परेशान थे और अपना आप को रोकना चाहते थे, but could you? Force recovery ही बहुत important है। मुझे तो लगता है that works even better than the voluntary recovery. Because healing के लिए टाइम चाहिए और वो फोर्स कंडीशन में वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट। वरना लोग मतलब दे ऑलवेज आर मैनिपुलेटिव एंड वांट टू गेट अवे। दे आर ओनली फाइंडिंग रीजंस टू रन अवे देन फेस इट। भाई इजी एस्केप है ना, आसान तरीका क्या लगता है? हो गया यार, मैंने वादा कर दिया, मैं कर लूंगा। डिफिकल्ट क्या है? अपना आप को पूरी तरह से चेंज करना। 2 महीने तक हमें बेवकूफ बना रहा था, 2 महीने 25 दिन, इधर से उधर, हमें समझ में ही ना आया यार ये क्या हो क्या रहा है। तो हमें क्या बेवकूफ बना रहा था? खुद ही बेवकूफ बना रहा था। उसकी बहन उसका इलाज करा रही थी बिकॉज शी वाज अ रिच लेडी। एक दिन आके मुझे कहता है आपसे कुछ बात करनी है। And then he started crying and saying, I mistreated my wife very, very badly. I was involved with another girl, and after drinking, I used to abuse my wife and talk to that girl and tell my wife she's a whore and all those things. And I think I have done very wrong, and I have to be sincere and look after my wife.
एंड जैसे ही उसने वेंटिलेट किया ना, उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया और आज 8 साल हो गए वो clean है। तो हम लोग ना अपने बस को छुपा के रखते हैं और गेम खेल रहे हैं। अब यहाँ पे है रोल ऑफ ऑनेस्ट। एक मूवी थी स्मैश, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल उसमें दिया। उसमें ये दिखाया है कि एक टीचर है और वो बहुत ड्रिंक करती है, और जब स्कूल आती है सुबह को तो कई बार उल्टी हो रही होती है, तो बच्चे पूछते हैं यार क्या हो गया आपको, तो कह देती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, किसी को कुछ कह देती है। तो वहाँ का वाइस प्रिंसिपल जो था वो वाज अराउंड 55 एंड दिस गर्ल वाज 30। दिस गाय टेक हर टू द ए मीटिंग, एंड जब 8-10 मीटिंग हो गई तो वन डे he said, see, I want to express my feeling honestly, that I have a sexual desire with you and I feel you will be really hot. Okay. And ये लड़की कहती है you are crazy and I will not come with you. Now at the end of the movie, she realized that उसकी problem जो है उसके husband के साथ relationship है, and there is the biggest conflict, and she walk out of that marriage and understand कि वो बंदा honesty से share कर रहा था अपनी feeling, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। Now I think you need to be honest and openly start sharing that creating a facade with others. तो इस चैप्टर में यहाँ से स्टार्ट किया और एंड में उसने कहा है भाई देखो कई बार बड़ा फियरफुल होते हैं कि हमारा कोई फायदा उठा लेगा, बट आज की तारीख में यार ये कोई हम मोदी जी तो है नहीं, या अमिताभ बच्चन तो है नहीं, या शाहरुख खान तो है नहीं कि लोग वालों को कोई मतलब है। Who is bothered about us? Please treat yourself. Get better. Now इसको उसने वर्ड यूज किया है rigorous honesty। ऊपर से दिखाने वाली ऑनेस्टी नहीं भाई, बेवकूफ बनाने वाली ऑनेस्टी नहीं, अंदर से बदलाव। और एक बार अगर वो आ गया ना तो बॉस यहाँ रहना would be most pleasant experience you will ever। अचानक से तुम्हारा whole perception about the place will change। सारी दिक्कत कहाँ पे? बिकॉज हम अपनी ऑनेस्टी को शेयर ही नहीं करना चाहते। हम तो अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में, अपनी ईगो में, अपने अहंकार में जी रहे हैं ना। तो जिस दिन तुम्हें ये जगह में इंटरेस्ट आने लग जाएगा ना, उस दिन समझ लो अब तुम ऑनेस्ट हो। एंड रिकवरी के लिए वन ऑफ द एसेंशियल, तुम्हें अपने अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा इमोशनली, एंड अनलेस अनटिल वो बदलाव लाओ कि भाई मुझे सब पता है, इसकी जगह नहीं यार मैं तो एक एडिक्ट हूँ, मुझे बदलाव लाने की जरूरत है। गुस्सा, उसकी जगह शांति, ह्यूमिलिटी, इंसानियत। सो जैसे जैसे तुम ये अपने अंदर से बदलाव लाओ तो अचानक से तुम एहसास करोगे कि तुम्हारी जो हैप्पीनेस जो आर्टिफिशियली ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो तो अपने अंदर ही है। तो नो हैप्पीनेस कैन बी फ्रॉम आउटसाइड। केमिकल लेके कोई हैप्पी थोड़ी हो सकता है जीवन में। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल से हैप्पीनेस मिले। विल इट वर्क? हैप्पीनेस, खुशी तो अपने अंदर ही है ना। लेट्स से हम किसी की कोई मदद करते हैं तो हमें कैसा लगता है? एंड दैट इज द हैप्पीनेस। तो अभी क्या हो रहा है? अभी हमको अपने केमिकल से दूर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम अलग हैं, बाकी सब हमें नहीं पता जी, हम तो इसी से ढूंढ सकते हैं। दिस विल इट बी ए हैप्पीनेस? तो ये कह रहा है कि भाई हम एक आम आदमी हैं और हमें एक आम आदमी की तरह सोचना होगा, एंड हमें होप
करनी पड़ेगी कि हम ठीक हो सकते। उसके लिए हमें एक हायर पावर में सरेंडर करना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, इंसानियत पैदा करनी पड़ेगी, विनम्रता लानी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। छोड़ देना, ले लेना, ये सब साइकिल सेकेंडरी है। बट कहीं ना कहीं रिकवरी के लिए अपने आप को स्पेशल नहीं समझना है। हम एक आम इंसान हैं, वी आर ए ह्यूमन बीइंग, वी आर नो स्पेशल। हमें अपने ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी से करना।